अस्सलाम वालेकुम। असद जी, मैंने बहैसियत सियासी वर्कर मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर बहुत तनकीद की। यूथियों ने तो तनकीद की ही की, साथ में जालों ने भी तनकीद की और जमातियों ने भी तनकीद की। चाहिए तो यह था कि शहबाज शरीफ साहब उस तनकीद से दिल बर्दाश्ता होकर पीछे हट जाते और पाकिस्तान को अपने रहम करम पर छोड़ देते, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ते रहे और हर वक्त यही खबर सुनाते रहे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ साहब को भिखारी का ताना भी दिया गया, लेकिन उस भिखारी ने मुल्क के हालात ठीक करने का बीड़ा उठा लिया और आज जिस तरह दुनिया में पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, इस तरह आज तक शायद कोई न लड़ा हो। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में शहबाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले आएंगे। हमने जो भी तनकीद की मियाँ शहबाज शरीफ साहब से हम माजरत खा हैं। मियाँ साहब, हमसे आपको पहचानने में गलती होगी, हो सके तो हमें ये गलती माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ये वीडियो देखें और अंदाज़ा आप खुद लगाएं। Last year we had the most devastating floods as a result of climate change in Pakistan. 33 million people were affected. Millions of acres of standing crop was washed away. 1,700 people died, including children. 500,000 animals were drowned. 2 million houses were either completely demolished or partially damaged. Now we had to cough out hundreds of millions of dollars from our own pocket with our scarce resources and provide paltry sum of money to these flood affectees all over the country. Now, ladies and gentlemen, we know that there are tensions around the globe and billions of dollars are being spent over there to defend those countries. That's fine. I have no problem with that at all. But when it comes to the question of saving suffering humanity, I can tell you thousands and thousands of people from dying, then you have to borrow money at a very high cost. Ladies and gentlemen, I am not here to moan and cry and shed tears. I am here to tell you that I am a human being. I belong to a country where my people are very brave. They have faced problems and crises in the past and faced courageously. We shall come out of this crisis, inshallah, as winners. But I want to share my experience with you. What I'm saying is that unless and until we come out with a fair, equitable and judicious formula of distribution of resources, financial resources, this world will never live in peace. But this must also be remembered that if South is in trouble, how can North be in peace? It's like one body. If one of the limb of the body is in trouble, is painful, you can't say the rest of the body is in peace. So it's never too late. Let's stand up and say no to injustice. Thank you very much.